Okay, in this class, we are going to discuss the another topic in the chapter acid, bases, and salt. In this class, we are going to discuss about the topic that is bases and indicators. In the previous class, what we did is we discussed about what are acids and what are the various types of acids. Okay, on the basis of origin, on the basis of strength, on the basis of amount of water, acids are divided into two types. So in that previous class, what we did is we discussed everything about the acids. Now in this class, what we are going to do is we are going to discuss about the bases and indicators. Now, first of all, let us define what are called bases. Bases are those substances which are bitter in taste and soapy in touch. Okay. So what are those bases? Bitter means kadwa. The bases जो होते हैं ये कड़वे होते हैं, कड़वे. And soapy means you might have seen the uh, you are using the soap for bathing purpose and also cleaning the clothes. That soapy nature means very slippery nature. That slippery, the bases when they are in contact with the hand, they will show slippery nature. वो soapy और slippery जैसे होते हैं, जैसे आपके साबुन होते हैं वैसे ये बेस भी होते हैं. ओके, तो आपके why what is the reason? Because आपके जो साबुन जो होते हैं उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है बेस होता है. दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वो एक बेस है. तो इसीलिए बेसिस का अगर हम कॉमनली एग्जांपल लिया जाए तो आपका जो बाथिंग और टॉयलेट सोप दैट इज नोन एज योर बेस. ओके, नाउ what are called then alkalis. Those bases which are completely soluble in water, they are called alkalis. Means बेसिस बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे बेसिस होते हैं, लेकिन वो बेस जो पूरे के पूरे वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, पूरी तरह से घुल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा कलरलेस सॉल्यूशन बनाएंगे, दोस बेसिस दे आर नोन एज अल्कलीज. तो एग्जांपल क्या क्या होंगे इसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये सारे बेसिस जो हैं इनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, इट विल फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन. मींस आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ डिसॉल्व हुआ है. इट विल बिहेव मोर लाइक योर नॉर्मल सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन. ओनली द डिफरेंस इज जब उस वाटर को आप टच करोगे तो यू विल फील दैट समथिंग स्लिपरी इन दैट वाटर एंड दैट स्लिपरी नेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस. जैसे उस वाटर को टच करोगे तो आपको लगेगा कि हाथ में बहुत सी एक ऐसा स्मूथ चीज और गीला चीज जो आपको आप सूप पकड़ते हो उसके टाइम जैसा फील होगा, उसी सेम फील होगा. सो ये फील क्यों आता है? बिकॉज द बेसिस दे आर स्लिपरी और सोपी इन नेचर. सोपी होता है, स्लिपरी होता है, that's why you will feel that particular taste. Now what about the types of bases? On the basis of strength, again like acids, bases are also divided into different types. So on the basis of strength, there are two types of bases. First is strong base, second is your weak base. Like acid also strong acid is there, weak acid is there. Similarly, we have two types of bases. One is strong base, another is weak base. The bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide are called strong bases. Okay, and what about weak bases? The bases like magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, aluminium hydroxide, copper hydroxide are called weak bases. Now, why they are called weak bases and strong bases? In order to read that, we have to go for the higher classes. Okay, here we are just dealing with the types of bases. Okay, what are the bases and what are the types of bases? So if you want to know more about these acids and bases, then you have to go for the higher classes, for example in 10 and 12. Okay, so there you will be reading more about these acids and bases. Now in the next, let us see some of the examples of bases. Here I have taken two types of bases. One is strong base, another is weak base. The strong base, sodium hydroxide, NaOH, KOH, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, MgOH whole twice. Then what about weak base? MgOH whole twice, that is okay, I have there is a mistake. This is a calcium hydroxide, CaOH whole twice. Okay, now here it will be CuOH whole twice, that is copper hydroxide, and here it will be aluminium hydroxide, AlOH whole thrice. So these are some of the examples of acids and some of the examples of bases. Here there are two types of example. One is of strong base, another is of weak base. Okay, दो टाइप के बेसिस होते हैं. नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज इंडिकेटर. तो इंडिकेटर क्या होते हैं? जैसे आपको बोला जाएगा हाउ विल यू नो दैट द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, whether you are going to taste it? No. Why? Because it has been already explained to you that all substances are not edible. Some are very poisonous in nature. So अगर किसी एसिड या बेस को आप खा लेते हो जो poisonous है, then you are in serious trouble. Okay, and that's why it is not advisable
to either touch the acid or base or either taste the acid or base. ठीक है, ना तो आप उसको टच करने इसको बोला जाएगा, ना ही उसको टेस्ट करने के लिए बोला जाएगा. क्यों? बिकॉज अगर टेस्ट करते हो एसिड या बेस से, अगर वो पॉइजनस होंगे, देन यू आर इन प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट यू माइट डाई. एंड सेकंड इज, बहुत सारे एसिड आपने देखा होगा, एसिड बहुत ही ये होते हैं, डेंजरस होते हैं. सो व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विद स्किन, दे विल बर्न द स्किन. सो ऐसा नहीं है कि आप एसिड को टच करके और बेस को टच करके बता दोगे. बाय चांस अगर वो एसिड हुआ तो then what happen, you are going to burn your hand. So that's why it is said that it is not the best way to either taste the acid or touch the acid. Okay, acid या base को ना तो टच करना पॉसिबल है, बेटर है, ना ही उसको टच करना पॉसिबल है. ना तो उसको टेस्ट कीजिए, ना उसको टच कीजिए. हो सके तो you have to go for another way by which we can know whether the substance is acid or a base. अगर आप पहले से मालूम है, ठीक है, इफ यू आर सप्लाइड विद टू सब्सटेंसेस, वो दोनों देखने में एक जैसे होंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक जगह रख दिया जाए तो देखने में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं. ना हाउ विल यू नो दैट विच एसिड एंड विच इज बेस? कैसे पता चलेगा आपको कि कौन एसिड है और कौन बेस है? तो उसके लिए एक सब्सटेंस यूज किया जाता है, एंड दो सब्सटेंस इज नोन एज इंडिकेटर्स. जो सब्सटेंस बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड या बेस है, दो सब्सटेंसेस दे आर नोन एज indicators. Indicators देखिए, an indicator is a chemical substance which shows different color in an acidic and basic medium. ये क्या करते हैं, कैसे बताते हैं? ये अपनी कलर चेंज करते हैं. अपनी कलर एसिडिक मीडियम में कुछ दूसरा शो करेंगे, बेसिक मीडियम में कुछ दूसरा शो करेंगे, एंड द चेंज इन कलर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेसिस. अब ये कलर को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा एसिड है लिक्विड और कौन सा बेस है. Just not by looking, because looking से आपको दोनों ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा. Second, if you are going to taste it, there is a chance that you might be in a serious trouble because it may be dangerous or it may also burn your skin. The second is you are not going to touch it. Touching करोगे फिर से same, it might burn your skin. Okay, bases are soapy, but what about अगर if that is acid? अगर वो acid हुआ तो what happen? What will do? Then your skin will be burnt. So in order to get rid of this problem, we are having substances that is indicator. ये इंडिकेटर जो होगा उसमें मदद करेगा हमको. ओके, इंडिकेटर हमको बताएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है. तो व्हाट आर द एग्जांपल? लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स. फॉर एग्जांपल, लिटमस पेपर, टर्मरिक जूस, जूस ऑफ चाइना रोज, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज. अब यहाँ में लिटमस पेपर, टर्मरिक जूस, ये आपको हल्दी का जो रस होता है, दैट इज turmeric juice, and juice of China rose. China rose आपने देखा होगा, this is not like a normal rose, rather it is pink in color. Okay, so these all act as an indicator. Now you might not have seen this phenolphthalein and methyl orange. You might have seen this litmus paper. Okay, but these two is certainly seen by you. One is your turmeric, जो हल्दी हो गया, और China rose. China rose that is a pink rose. Okay, generally rose are black in color, but this China rose is pink in color. Okay, so these are the some of the examples of indicators. Now let us see how the color changes in an indicator. So पहला क्या आता है जी? litmus solution. Okay, so litmus solution कैसे बनता है? उसी litmus, it is an indicator obtained from lichens and purple in color. ये lichens एक टाइप की फंगस होती है जो कि ऐसे वाटर बॉडीज के किनारे ग्रो करती है डैम्प प्लेसेस में, और इसकी जो कलर होती है वो होती है पर्पल कलर. तो क्या किया जाता है, जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो उसको क्रश किया जाता है. क्रश करने से जो लिक्विड निकलेगा, दैट इज नोन एज योर लिटमस सॉल्यूशन. ओके, जो लिचेंस को क्रश करने की, इसकी कलर ही होती है पर्पल कलर. जब इसको क्रश करके इससे लिक्विड निकाला जाएगा, जैसे इमेजिन कीजिए जैसे आपको नॉर्मल जो वाइल निकाला जाता है मस्टर्ड से, वैसे ही इसको क्रश करके इससे भी वाइल जैसे निकाला जाता है, एंड दैट वाइल और द लिक्विड इज नोन एज लिटमस सॉल्यूशन, एंड इट इज पर्पल इन कलर. पर्पल कलर का होता है लिक्विड. ओके, तो इसका आप समझ सकते हो, इसका ये ऑयल है. ओके, एक तरह का. नाउ इट चेंजेस इट्स कलर टू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम. नाउ सी द कलर ऑफ द लिटमस, व्हाट इज द कलर हियर? पर्पल कलर. नाउ दिस सॉल्यूशन इफ इट इज एडेड टू एनी एसिडिक मीडियम, अगर कोई कंटेनर है जिसमें एसिड है, तो जैसे इस लिक्विड को इसमें ऐड करोगे, इसकी कलर क्या हो जाएगी? पर्पल से रेड हो जाएगी. और वो कैसा मीडियम में? एसिडिक मीडियम में. इससे पता चल गया कि वो मीडियम कैसा है? एसिडिक है. नाउ the same solution if it is added to another container which contain base, अगर कोई बेस है उसमें अगर आपने ऐड किया तो इसकी चेंज क्या होगी? कलर पर्पल से ब्लू. ये इंडिकेट करता है वो सब्सटेंस क्या है? बेस है. ओके, सो बाय एडिंग दिस सेम सब्सटेंस we can know whether the substance is acid or base.
तो पर्पल अगर रेड चेंज हो गया तो एसिड हो गया, पर्पल अगर ब्लू चेंज हो गया दैट विल बिकम बेस. नाउ इट इज कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स कॉल्ड लिटमस पेपर. अब अगर इसको जो हैंडलिंग थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इट इज अ लिक्विड एंड समटाइम द कंटेनर में ब्रेक. So what happened? It is converted into a paper. How it is converted into paper? We will take the very thin sheet of paper, strip of paper, sorry, and that is dipped in this litmus solution. Then it is dried. पतला स्ट्रिप लेंगे पेपर, नॉर्मल पेपर का, उसको उसके अंदर डुबाएंगे, देन इसको गीला को ड्राई करेंगे धूप में, देन इट विल बिकम अनदर पेपर दैट इज नोन एज लिटमस पेपर. सो लिटमस पेपर जो किससे बनता है? लिटमस सॉल्यूशन से बनता है. ओके, नाउ लेट अस सी अदर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. Okay, so here we are going to discuss the various color changes in an indicator. Indicators में क्या क्या color changes आपको मिलेंगे? For example, turmeric juice. Turmeric juice, I think that is available to everybody's house. So what is the color of this turmeric juice? You see here, what is the color? Yellow color. So yellow color when it is added to the acidic medium. Now where you will get the acidic medium in house? The acidic medium, the source of acid will be your lemon. So what you will do is you will add a little bit of lemon to this turmeric juice. कपड़े में डाल के थोड़ा सा, मतलब ये वेस्ट क्लॉथ होना चाहिए, उसके बाद उसमें ऐड कीजिए. You will find that there is be no change in color. Yellow ही रह जाएगा. What about basic? When you are adding basic solution to this turmeric juice, the color of the cloth or the spot of the turmeric juice changes to red color. Now where you will get this base? The best way of getting base in your home is your either you take the soap solution. अगर आपके घर में बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन भी ले सकोगे. Your color changes to red color. This red color indicates the substance is base. Okay, so basic के लिए आपको मैंने बताया कि क्या यूज करना है. या तो आप साबुन का पानी ले लीजिए या फिर बेकिंग सोडा है, जो खवा सोडा जो कॉमनली यूज किया बोला जाता है, that can be used as a base. उसका वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, then you can perform this particular test. This indicator is available in each and everybody's house. So ये दोनों टेस्ट तो आप इजीली कर सकते हो घर में. Next is China rose. China rose if you are having in your garden, then also you can do it. What you can do is China rose लीजिए, उसको बढ़िया से क्रश कीजिए, इसे ये क्रश कीजिए आपको इसमें घर में, देन उसके लिक्विड को निकालिए क्रश करके. उस लिक्विड जो बन गया वो क्या हो जाएगा? आप वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा. नाउ इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा एसिडिक मीडियम और एसिड डालेंगे. तो एसिड कहां से है? घर में. अगेन अब इसमें क्या ऐड करेंगे? लेमन जूस ऐड करेंगे. जैसे लेमन जूस ऐड करेंगे, इसका कलर ये क्या है? लाइट पिंक से हो जाएगा डार्क पिंक, और दिस इज आल्सो नोन एज योर मैग्नेटा कलर. ओके, लाइट पिंक से क्या हो गया? डार्क पिंक. सो दिस इज योर मैग्नेटा कलर. अगर इसमें थोड़ा सा बेसिक मीडियम यूज करेंगे, दैट इज योर सोप वाटर और यू कैन से baking soda, the color changes from light pink to green color. So see, in one case in acidic medium ये change हो रहा है light pink से dark pink में, तो acidic medium हो गया. अगर ये light pink से green में change हो रहा है, that is known as your basic medium or the substance is basic in nature. Now अगर हम तीसरा indicator लेते हैं, that is known as phenolphthalein. Phenolphthalein जो होता है ये colorless होता है, ये water की तरह होता है. There is no color of this phenolphthalein. Now what happened when it is added to the acidic और acid is added to this, there will be no change in color. ये जैसा है पहले वैसे ही रह जाएगा. What about then base? अगर उसमें थोड़ा सा बेस ऐड करोगे, जो कि सोप वाटर या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ऐड करोगे, तो जो कलर हो जाएगा वो कलरलेस से क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा. ये इंडिकेट करता है, ये सारा इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि किस केस में एसिड है और किस केस में बेस है. So these are the some of the experiment that can be performed in the home except this one. Phenolphthalein you will not find in your home, but I think turmeric juice and China rose, they are available in your nearby, and this is available in everybody's home. So these two experiment can be done even in your home, and please do this experiment in your home and tell me what do you observe in this experiment. And if you find any other observation, please let me know. Okay, now here are some questions related to the topics we discussed. First is acid turns the color of blue litmus paper to dash, base taste dash and have a dash film. What are called alkalis? Name two substances that can be used as indicators. So this is the